So, hi, good evening, everyone. I hope I'm perfectly audible and visible. So, if that's true, if you are able to watch me and hear me properly, just let me know so that I can start with this particular session. Right. So, just let me know if I'm audible and visible. वैसे mic and everything is showing that I'm perfectly audible and visible. So on that note, we can start with this particular session, and in this particular session, we'll be basically covering the important news pieces जो आज important कुछ चीजें हुई हैं उनको हम cover करेंगे. So let's start with this session now. Yeah, this is fine. Yeah. So let's start. So again, this is for the students who have difficulty or who are facing difficulty in solving static GK and current affairs. This is our dedicated batch for that. Static GK and current affairs classes केशव सर खुद लेते हैं. CLAT और elite का dedicated specific GK question bank, more than 4,000 questions, one short solution. कुछ भी दिक्कत है current affairs and GK में, GK question bank is your answer. You can enroll yourself in this particular GK question bank series as well. Then we have a specific dedicated batch for the students preparing for CLAT and ALE 2027, which will platinum. Then coming on to the most important segment, basically this is for the students जो CLAT और ALE 2028 की प्रिपरेशन कर रहे हैं. ये बैच हमने अभी 2 दिन पहले लॉन्च किया and this is प्रारंभ 2028, right? So and these are our 2 student support contact number. अगर आपको किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं while preparing for this specific exam, so you can definitely reach out to these 2 numbers. Now let's start with this particular session, and this session is, or every day's newspaper is mostly about this current West Asian conflict. And students, let's understand there are 2 important things that we'll be dealing in today's class. The first one is this new tantrum thrown by Donald Trump, where he has threatened that he will charge 20% as a kind of fee. अब अगर कोई $100 का क्रूड ऑयल लेकर के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को क्रॉस करेगा, then that specific ship has to pay $20 in a form of protection fee to the United States of America. ऐसा लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप दाऊद इब्राहिम है, उनका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे पूरा कंट्रोल है, और अगर कोई भी शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को क्रॉस करेगी तो पहले उसे एक प्रोटेक्शन मनी देना होगा. किसको? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को. नाउ बिफोर दिस कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड ऑन 28th of February 2026, on this day United States of America launched Operation Epic Fury. And before that, there was no problem in the Strait of Hormuz. Commercial ships were absolutely allowed to transit through Strait of Hormuz. Conflict was started by United States of America. That's why there is a kind of threat from Iran to the ships crossing the Strait of Hormuz. और अब प्रोटेक्शन मनी भी किसको देना है? अमेरिका को देना है. सो अमेरिका के लिए ये विन विन सिचुएशन है, राइट? बट लेट्स स्टार्ट विद दिस करंट डिस्कशन. सो जो लोग स्टार्टिंग से इस न्यूज को फॉलो कर रहे हैं, मैंने आप लोगों को 21 June 2026 when this Islamabad peace MOU was signed in Geneva, Switzerland, in person by the representatives of United States of America and Iran. मैंने आपको तभी बोला था कि 21 August 2026 तक डिसाइड किया गया कि 60 डेज का विंडो था. ये इस पीस अग्रीमेंट के थ्रू 60 डेज का एक विंडो क्रिएट किया गया था टू डिस्कस अ पीस डील इन अ लॉन्ग रन. बट आई टोल्ड यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो कि ये अभी इतना श्योर नहीं रहना है. अमेरिका और ईरान कब एक दूसरे पर अटैक करना शुरू कर दे, नो वन नोज, राइट? सो दैट वाज द मेन प्रॉब्लम. लैक ऑफ ट्रस्ट, element of trust was missing from both the parties, and that's why United States of America has started bombing Iran again. And the allegations, and this is a kind of both these countries are exchanging or transacting with a lot of heated arguments, and there is no benefit per se, क्योंकि पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज वापस से डिसरप्ट हो चुका है. ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बहुत तेजी से शूट कर रहे हैं, इन्फ्लेशन वापस से आने के चांसेस हैं. सो देयर आर मल्टीपल इंपैक्ट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर वॉर.
फैक्चुअल जर्नी याद रखिएगा, 28 फरवरी 2026 को कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था। अप्रैल में इंटरिम टॉक या फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक इस्लामाबाद में हुई थी। फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज हुआ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने नेवल ब्लॉकेड स्टार्ट किया। सेकेंड राउंड ऑफ इस्लामाबाद पीस टॉक के बाद फाइनली अग्रीमेंट साइन हुआ ईरान और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में जेनेवा स्विट्जरलैंड में 17 जून 2026 को वर्सिलीज फ्रांस में इन पर्सन इस अग्रीमेंट को साइन किया डोनाल्ड ट्रंप ने। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट क्या था, 60 डेज के लिए सीज फायर डिसाइड हुआ था एंड फाइनली विद ईरान बॉम्बिंग 3 शिप्स इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वापस से पूरा का पूरा जो पीस अग्रीमेंट था उसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने सस्पेंड कर दिया, राइट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद दिस डिस्कशन। नाउ जियोपॉलिटिकल क्राइसिस इन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। फर्स्ट वन इज द यूएस अनाउंसमेंट। व्हाट इज द फॉर्मल अनाउंसमेंट मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ Donald Trump, the president of United States of America, Mr. Donald Trump, that there will be a naval blockade, US military blockade plus naval blockade in the Strait of Hormuz to stop Iranian ships to transit through the Strait of Hormuz. बेसिकली जो ईरान है वो क्रूड ऑयल अपना किसी और कंट्रीज को ना बेच पाए, इसके लिए यूएस मिलिट्री और नेवी एक ब्लॉकेड करेगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, बिकॉज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ अदर कंट्रीज के लिए रेलेवेंट नहीं है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज इक्वली रेलेवेंट फॉर ईरान एज वेल। तो ईरान को फाइनेंशियली वीकेंड करने के लिए करंट ब्लॉकेड प्लान किया गया। Safe passes. The US declared it will act as a guardian of the Hormuz Strait and levy a 20% of fee on all cargo ship to reimburse the cost of providing maritime security. Now this is something which is so ironical and somebody should explain this to Mr. Donald Trump. अब ये 20% जो आप शिप से फी चार्ज कर रहे हैं, ये बेसिकली अपने मिलिट्री एडवेंचर्स को फंड करने के लिए है। मैरीटाइम सिक्योरिटी का तो नाम है कि हम भाई मैरीटाइम सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, इसीलिए हम 20% आपसे चार्ज कर रहे हैं। बट वो मैरीटाइम सिक्योरिटी की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर आप 28 फरवरी को अटैक ही ना कर दें। सो बेसिकली अमेरिका ये चाह रहा है कि उसके जो ईरान में एडवेंचर्स हैं, ऑल द एडवेंचर्स ऑफ ईरान मस्ट बी फाइनेंस्ड बाय ऑल द कंट्रीज विच आर इंपोर्टिंग क्रूड ऑयल थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। सो दिस इज समथिंग विच वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट the entire world has not taken the responsibility that they will pay for the war, or they will pay for a war which is not theirs to fight. Blockade scope. Now the restriction strictly target Iranian ports, vessel, customer entering or leaving the waterway while promising fair and open use for all other nations. So current blockade जो है, अब ब्लॉकेड आप मान लीजिए कि सारी ही कंट्रीज के लिए। फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि इरानियन शिप्स को तो एब्सोल्युटली स्टॉप कर दिया गया है, दैट दे कैन नॉट ट्रांजिट थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, एब्सोल्युटली फाइन। बट बाकी सारे जो शिप्स हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से क्रॉस करना चाहते हैं, उनको 20% फी देनी होगी। किसको? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को। सो बेसिकली दिस इज प्योरली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, राइट। क्योंकि अपने वॉर को फाइनेंस करने के लिए अमेरिका ये चाहता है कि वहां से जो लोग अपना शिप्स पास करें वही हमारे वॉर को फाइनेंस करें। सो दिस इज द एंटायर आइडिया। ईरान के शिप्स और जो भी कस्टमर्स हैं वो पूरी तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को यूज नहीं कर सकते, दे आर एब्सोल्युटली प्रोहिबिटेड। Economic impact: the escalating military tension and drone missile exchanges between the US and the Iran have pushed global oil prices by 4%. So that I have already told that this particular conflict will shoot the prices of crude oil, because the Strait of Hormuz is responsible for 20% of the global oil supply. 20% of the global oil supply passes through the Strait of Hormuz. इसीलिए Strait of Hormuz में जो conflict हो रहा है उसकी वजह से oil के जो prices हैं, crude oil के prices हैं, those prices are shooting very rapidly. External facts and context. Now what was the trigger event? The announcement followed a major Iranian attack on a commercial container vessel transiting the Strait of Hormuz. So this we have already discussed that Iran has attacked multiple ships in the Strait of Hormuz traveling to other countries, and after this Donald Trump was absolutely furious and he suspended memorandum of understanding and he started to attack Iran relentlessly. Then Iranian retaliation. Iranian Foreign Minister Mr. Abbas Araghchi, please remember his name. Abbas Araghchi is the Foreign Minister of Iran. He has played a very important role during this entire conflict. Abbas Araghchi hit back on social media claiming Iran remains the permanent
guardian of the Strait of Hormuz, noting that a 20% tariff is exorbitant, but mockingly agreeing that whoever secures the path deserves compensation. Right. So basically, now Mr. Abbas Aragachi, in long run, everybody knows this, that for a very long period of time, America cannot have the control of the Strait of Hormuz because it is the violation of international laws. Right. So ultimately, control किसके पास जाने वाला है? ईरान के पास ही जाने वाला है. Now America is setting a very bad precedent. अगर आप आज in form of security, in form of protection money, you are demanding 20% of the entire value as kind of maritime security fee. तो कल जब ईरान के पास में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल आएगा, क्या गारंटी है इस बात की कि ईरान वापस से 20%, चलिए वो 20% डिमांड नहीं करेगा, वो 10% डिमांड करेगा, बट वो डिमांड तो कर ही सकता है. और ईरान क्या बोलेगा कि भाई ठीक है, ईरान अमेरिका को आप लोग 20% दे रहे थे, तब आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी, बट अगर मैं 10% डिमांड कर रहा हूं तो आप लोगों को इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों हैं? एंड वी हैव द एब्सोल्यूट अथॉरिटी और एंड कंट्रोल ओवर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज. सो अमेरिका इज सेटिंग अ वेरी बैड प्रेसिडेंट व्हिच माइट बी यूजफुल फॉर ईरान. और इस पूरे वॉर में अमेरिका को तो वैसे भी सब्सटैंशियली कुछ मिला है नहीं, सारी चीजें ईरान को ही मिली हैं. राइट. सो अमेरिका को टेम्परेरी बेनिफिट हो सकता है, लॉन्ग रन में ईरान को बेनिफिट होगा. फाइनेंशियल बर्डन. At present market rates, a 20% levy could cost a fully laden, very large crude carriers around $32 million per transit, vastly exceeding any historical maritime passage fee. So historically ये ऐसा आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ था कि इतने हाई सिक्योरिटी फीस या ट्रैवल ट्रांजिट फी देना पड़े. अब 2 मिलियन बैरल्स तक होते, जो बड़े शिप्स होते हैं उसमें 2 मिलियन बैरल तक होता है क्रूड ऑयल, ऑलमोस्ट जिसका वैल्यू $165 मिलियन के आसपास में होता है. अब जो भी शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस कर रहा है जिसमें $165 मिलियन का क्रूड ऑयल है, उसमें से अब $33 मिलियन आपको देने होंगे अमेरिका को एज अ फॉर्म ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी फी. दैट्स व्हाई देयर इज अ लॉट ऑफ, अब नाउ दिस इज गोइंग टू चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर अमेरिका एज वेल. राइट. Global red flags. The United Nations International Maritime Organization IMO formally registered its opposition to the levy, reiterating that the international waterways must remain free from arbitrary transit rules. So basically abhi United States of America at this point of time is not considering about any particular wing of United Nations. Donald Trump considers United Nations is an absolute waste garbage. It has failed to achieve the objective with which it was established. So अब अगर कोई डेडिकेटेड स्पेशलाइज्ड एजेंसी भी है, अब इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने बोल दिया कि ये जो यूनिलैटरल फीस है, ये जो आप लगा रहे हैं, आप किसी इसका ये दिस इज टोटली इररिलेवेंट, अनलॉफुल. बट अमेरिका कहाँ मानने वाला है? द इंडिया यूएस फ्रेमवर्क ट्रेड अग्रीमेंट. अब दूसरा इंपॉर्टेंट इशू जो इंडिया और यूएस के बीच में एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज अ फ्री ट्रेड और अ ट्रेड अग्रीमेंट, द फ्रेमवर्क ट्रेड अग्रीमेंट, जिसको लेकर के a lot of statements have been made by both the countries, and finally it has been decided that very soon we will sign a trade agreement with United States of America. And what is the latest problem? Why we have failed to sign this particular agreement? So a lot of negotiations were taking place, and since Donald Trump has imposed 25% tariff on Indian imports last year on 2nd of April 2025, declaring it as Liberation Day for America. So on 2nd April 2025, Donald Trump declared कि ये Liberation Day है और 25% टैरिफ इंपोज किया इंडिया पे, और उसके बाद 25% टैरिफ और इंपोज किया, साइटिंग द रीजन दैट वी आर परचेजिंग अ लॉट ऑफ क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया एंड वी आर फाइनेंसिंग रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट. 50% टैरिफ इंपोज किया गया इंडिया पे. ये ट्रेड नेगोशिएशंस तो पिछले साल फरवरी से ही चल रहे थे, बट डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये टैरिफ इंपोज किया उसके बाद दीज टॉक्स वर सस्पेंडेड बिकॉज वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर ओन इंटरेस्ट. इसके बाद फिर 25% टैरिफ जो प्यूनिटिव टैरिफ थे उसको सस्पेंड किया, और जो 25% टैरिफ प्राइमरली इंपोज किया था उसको 18% किया. बट a very important development took place on 20th February 2026, where the Supreme Court of United States of America has pronounced a very historic judgment declaring that the tariffs imposed by Trump administration were totally unconstitutional because those tariffs were imposed by violating the US Constitution. A prior approval of US Congress was not taken.
Stressed by this particular judgment, on 24th February 2026, Donald Trump made another major announcement, and he said that we will impose 10% tariff on every trading partner for next 150 days by using the powers given under Trade Act of 1974. Right? Section 124 of Trades Act of 1974, I guess, right? Then what happened? International Court of Trade in United States of America in the month of May 2026 declared this additional 10% tariff as unconstitutional, citing the same reason कि भाई US Congress का prior approval नहीं लिया गया था. Now again, saddened by this particular judgment of International Court of Trade, Donald Trump invoked Section 301 of Trades Act of 1974. Now, this Section 301 of Trades Act of 1974 is one of the most vital and essential power with the American government. अब Section 301 ये बोलता है कि अगर कोई भी कंट्री किसी गुड्स और सर्विस को मैन्युफैक्चर करने के लिए चाइल्ड और फोर्स लेबर का यूज करते हैं एंड सब्सिक्वेंटली दोज गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सपोर्टेड टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उन कंट्रीज के ऊपर प्यूनिटिव टैरिफ इंपोज कर सकता है. दिस इज एज पर द सेक्शन 301 ऑफ द ट्रेड्स एक्ट ऑफ 1974. नाउ स्टूडेंट्स, एट द सेम टाइम वी हैव टू अंडरस्टैंड, and this is going to be one of the most vital piece of information, that at this point of time we are negotiating a peace deal with trade deal with the United States of America, and America is thinking to impose 12.5% punitive tariffs on India for violating Section 301 of Trades Act of 1974, which talks about a provision कि अगर आप चाइल्ड लेबर और फोर्स लेबर का यूज कर रहे हैं उन गुड्स और सर्विसेज को मैन्युफैक्चर करने में जो आप अमेरिका में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम आप पे टैरिफ लगा सकते हैं. तो जब इतना टेंस्ड इन्वायरमेंट होता है, जब इतना हेटफुल इन्वायरमेंट होता है, तो उस ऐसे इन्वायरमेंट में ट्रेड डील नेगोशिएट करना इज वेरी डिफिकल्ट. एंड ऑल्सो इंडिया इज लुकिंग फॉरवर्ड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इट्स फार्मर्स एंड पीपल हु आर इन्वॉल्व इन द एग्रेरियन इकोनॉमी. इस वजह से भी अभी इस पर थोड़ा सा डिले है. राइट, सो इंडिया हैज ऑलरेडी प्रेजेंटेड इट्स साइड कि भाई क्या करने वाले हैं. राइट, अब 12.5% टैरिफ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और सिर्फ इंडिया पे नहीं लगेंगे. अलॉन्ग विद इंडिया देयर आर 53 अदर कंट्रीज इन पे 12.5% का टैरिफ लगेगा. डुअल इन्वेस्टिगेशन, इंडिया इज कॉन्करेंटली फेसिंग 2 USTR probes, one of forced labor and another looking into structural access capacity. Third one is comparative advantage hurdles. While the framework is legally sound, negotiators are still fine-tuning specific tariff advantages of India over key regional competitors. तो अब बहुत फाइन ट्यूनिंग हो रही है इस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, इस ट्रेड अग्रीमेंट की जो हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ साइन करने वाले हैं. Now this is a very important ruling coming all the way from the Supreme Court of India, and the order was passed by a division bench of the Honorable Supreme Court of India on 13th of July 2026, and this division bench comprises of Justice Vikram Nath and Justice Sandeep Mehta. So what is the important aspect of this particular judgment which was pronounced by this division bench of Justice Vikram Nath and Justice Sandeep Mehta? It is related, or it talks, or it covers certain aspects of the citizenship. Now, when we talk about the aspect of citizenship, please remember this particular fact, that Part 2, Article 5 to 11 talks about the principles related to citizenship. A very vital piece of information for Indian polity, for static GK. It's very vital piece of information. Part 1 is Union and its territory, Union and its states. Article 1 to 4, Part 1 is Union and territory and its territory. Then Part 2, Article 5 to 11 is citizenship. Then Part 3, Article 12 to 35 is fundamental rights. Then Part 4, Article 36 to 51 is directive principles of state policy. Then we have Part 4A, which talks about fundamental duties, right? So these are some aspects of the Constitution of India which might be relevant for your examination. Now coming back to the current ruling given by the Honorable Supreme Court of India on 13th of July 2026. And what is the relevance of this particular ruling? Where it has set aside certain important orders passed by the tribunals and the Guwahati High Court. Now let's talk about the core ruling of the Supreme Court of India. We'll also discuss the background of this particular judgment. हम next slide में इसका background
क्या इंपॉर्टेंट इश्यूज थे वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले भी लेटेस्ट डेवलपमेंट हम देख लेते हैं। लेटेस्ट डेवलपमेंट अगर हमें पता होगा तो अगर हम बैकग्राउंड अगर हम बाद में डिस्कस करेंगे तो रिलेटेबिलिटी थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाएगी और आप कनेक्ट इजिली कर पाएंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेटमेंट इटसेल्फ. So the Supreme Court set aside a batch of 27 Guwahati High Court judgments that had affirmed the foreigner status of the appellants. So ये गुवाहाटी हाई कोर्ट ने 27 इंडिविजुअल्स ऐसे थे जिनका फॉरेनर स्टेटस अपहेल्ड किया था, मतलब जो अलग अलग ट्रिब्यूनल्स थे, फॉरेन ट्रिब्यूनल्स थे, मतलब फॉरेन ट्रिब्यूनल्स एज इन कि जो सिटीजनशिप का स्टेटस डिफाइन करते हैं, अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो उन ट्रिब्यूनल्स ने क्या किया था कि 27 इंडिविजुअल्स ऐसे थे जिनका स्टेटस जो है वो डिक्लेयर कर दिया था कि ये फॉरेनर्स हैं और इन्हें इनके रिस्पेक्टिव कंट्री में डिपोर्ट किया जाना चाहिए। देन दीज डिसीजंस ऑफ द ट्रिब्यूनल्स वर अपहेल्ड बाय द गुवाहाटी हाई कोर्ट, बट फाइनली द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैड सेट असाइड द ऑर्डर पास्ड बाय द गुवाहाटी हाई कोर्ट. Now it was given by a 2 judges bench, Justice Vikramnath and Justice Sandeep Mehta, that we have already discussed. Now what was the main directive issued by the Honorable Supreme Court of India? The cases have been remanded, sent back to their respective foreigners tribunal for fresh independent adjudication. So by setting aside the judgment passed by the Guwahati High Court, the Honorable Supreme Court of India had set all the petitions back to the foreigners tribunal that you have to investigate, you have to conduct a fresh trial in these 27 petitions, because when initially these petitions were heard, those were not heard with a rightful and with a lawful approach. And what was the missing point, we'll discuss in the later part of our discussion, but we'll discuss that as well. Now, time bound resolution. Now this is something which I love, this particular fact about the Supreme Court, that sometimes there have been instances जहां पर Supreme Court अपनी powers को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करता है, एंड दिस इज वन सच इंस्टेंस. क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने? द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड दैट द फर्स्ट एडजुडिकेशन मस्ट आइडियली बी कंप्लीटेड विद इन 6 months. You cannot take a lot of time. You have to decide all these petitions within 6 months, right? So time bound adjudication is very important for a rightful or for a right justice. Interim protection. अब जिन लोगों को फॉरेनर का स्टेटस दे दिया था इन ट्रिब्यूनल्स ने और उसे अपहेल्ड कर दिया था गुवाहाटी हाई कोर्ट ने, जिसे सब्सिक्वेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ओवरटर्न कर दिया, तो अब इन लोगों को क्या होगा? अब इन लोगों के साथ में क्या होगा? बिकॉज दे हैव 6 months, जब तक ये ट्रिब्यूनल फ्रेश सारी चीजें वापस से कंडक्ट करेगा, इनके पास 6 महीने. तो अभी नेक्स्ट 6 months के लिए क्या बोला है? इंटरिम प्रोटेक्शन. द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैड सेड दैट नो कोercive स्टेप्स, डिटेंशन और डिपोर्टेशन can be taken against the appellants in the interim. Appellants must be appear before the tribunals within 4 weeks. So finally the Supreme Court had made one thing very clear, that the authorities cannot detain them or deport them. इन 27 इंडिविजुअल्स को या जो कंसर्न इंडिविजुअल्स हैं इनको प्रेजेंट होना होगा बिफोर द फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल विद इन 4 weeks, right? Now moving on to the next part. Core case rationale and timeline, the Sabitri Day case. So case title is the Sabitri Day case. Now, unawareness of proceedings. The petitioners argued that they had zero knowledge of the 1997 tribunal proceedings until they learned about their order decades later in 2019. So now this was the most interesting part. Now students, when we talk about a judicial trial or when we talk about trial per se, there is a very important principle of natural law which has to be taken into consideration. And what is that principle of natural law? Audi alteram partem. Here the other side. So here what happened, that these foreigner tribunals passed multiple orders against these individuals और इनको पता ही नहीं था कि इनके अगेंस्ट एक ट्रिब्यूनल में केस चल रहा है. तो बेसिकली क्या हुआ? here it was the violation of principle of natural justice, क्योंकि जो अदर साइड इन्वॉल्व थी उससे प्रॉपर हियरिंग का मौका ही नहीं मिला फॉरेनर ट्रिब्यूनल्स में. एंड वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस is a grave mistake, and the Supreme Court of India cannot subside or cannot ignore this particular violation of principle of natural justice. तो भाई पिटिशनर्स ने बोल दिया कि हमको तो पता ही नहीं था कि हमारे अगेंस्ट केस चल रहा है किसी ट्रिब्यूनल में, और 22 साल बाद पता चला जब ऑर्डर पास हुआ. फ्लॉड एविडेंस बेस. द 1997 ऑर्डर पास्ड by the illegal
by the illegal migrants determination tribunal relied on the hearsay evidence of an inquiry officer rather than substantial proof. Now hearsay evidence का मतलब क्या होता है, जो आप कहीं से सुनते हैं, राइट. सो बेसिकली जो ये फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल था जिसने ये ऑर्डर पास किया था रिगार्डिंग द स्टेटस ऑफ सिटीजनशिप ऑफ दिस 27 इंडिविजुअल, दिस पर्टिकुलर ऑर्डर वाज नॉट बेस्ड अपॉन something very substantial. It was not based upon some conclusive proof. It was purely based upon a statement given by the inquiry officer कि सर मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों ने पास में ये कागज नहीं है, या इन लोगों ये लोग ऐसी ऐसी चीजें करते हैं, या हमें इन पे शक है कि ये इंडियंस नहीं है. इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बेसिस पे फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ने इन्हें फॉरेनर का स्टेटस दे दिया था. गुवाहाटी हाईकोर्ट डिसमिसल. So the Guwahati High Court had dismissed their initial appeal in 2020 on the grounds of utter negligence, citing that they waited 23 years to challenge the original 1997 order. So this was something which was very heartless statement given by the Guwahati High Court. Now these individuals were saying that we were not aware about the fact that a proceeding was taken place against us, or it was taking place against us. At the same time, Guwahati High Court has said that अभी तक आप क्या कर रहे थे, 1997 का ऑर्डर है भाई, अभी आप क्या कर रहे थे भाई, इतने लेट में कौन आता है, राइट. तो डिसमिस कर दिया. अब फिर क्या है, अब इंडिया में एक चीज अच्छी है, आपको ट्रायल कोर्ट का फैसला पसंद नहीं आया आप हाई कोर्ट चले जाइए, आपको हाई कोर्ट का फैसला पसंद नहीं आया आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए. सो यू हैव मल्टीपल लेवल्स ऑफ अपील. तो आप केस अपील में कहां पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट. The Guwahati High Court had initially dismissed the residents' appeal. The High Court ruled that because the proceedings failed to appear despite being served notices, the tribunals had no option but to issue ex parte orders affirming they were foreigners. Ex parte order का मतलब क्या होता है, when the other party is not heard, an order is passed without hearing the other party, it is called an ex parte order. So the Guwahati High Court said that even after giving multiple notices to these accused or to these individuals, they failed to appear before the tribunal. That's why the tribunal has to pass an ex parte order. The lead matter, Sabitri Day at Swasthi Day Union of India. So this case goes back to 1997 when there was a couple, Swasthi Day and Sabitri Day. Order by the Illegal Migrants Determination Tribunal, which labeled a couple as illegal migrant based primarily on hearsay evidence when they failed to appear. So this case goes back to May 1997 when a couple in Assam was declared as a foreigner by a tribunal when a specific notice was produced, when a specific notice was issued for their presence before the tribunal, but they failed to appear before the tribunal. तो कोर्ट ने हियर से एविडेंस के बेसिस पर एक्स पार्टे ऑर्डर पास कर दिया कि दैट यस यू फेल टू present yourself before the tribunal, so you are a foreigner, right? Now what happened, hyper technical omission. Appellants argued that they were stripped of citizenship status based on minor typographical errors and minor spelling mismatch in historical electoral roll. अब अभी जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है उसमें भी तो बहुत सारा मिस्टेक है. गांगुली में GONGULY, तो बहुत सारा स्पेलिंग मिस्टेक्स की वजह से भी बहुत सारे लोगों का नाम हटा दिया गया. तो ऐसा सिमिलर आर्ग्यूमेंट था इन कपल्स का कि भाई हमारे नाम में जो पुराने इलेक्टोरल रोल है उसमें थोड़ा सा टाइपोग्राफिकल और मिसमैच एरर था, इस वजह से हमारा नाम आप सीधे सिटीजनशिप से स्ट्रिप ऑफ, हमारी सिटीजनशिप आप स्ट्रिप ऑफ नहीं कर सकते हैं, राइट? सो व्हाट हैपेंड नाउ, व्हाट इज द सेक्शन 9 ऑफ द फॉरेनर्स एक्ट ऑफ 1946? Now this section 9 of the Foreigners Act of 1946 is very important because it dictates that the burden of providing that a person is not a foreigner rests entirely on the individual, the proceeding. Now what is the important law point in section 9 of the Foreigners Act of 1946? कि जो person जिस पे allegation है that you are a foreigner, उसी particular person को ये प्रूव करना होता है that he is an Indian citizen. उसे ट्रिब्यूनल के सामने प्रूफ करना होता है that he is an Indian citizen. So section 9 of the Foreigners Act of 1946 shifts burden of proof from the state to the proceeding. The Guwahati High Court relied strictly on this to justify ex parte orders, arguing the burden does not shift even if the individuals fail to appear.
Right. Now the next important observation made by the Guwahati High Court was based upon Section 9 of the Foreigners Act of 1946, and it said कि अगर मान लेते हैं हम कि जो जिन लोगों के अगेंस्ट ऐसे एलिगेशंस थे वो लोग ट्रिब्यूनल के सामने अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर सके, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो सेक्शन 9 का रिक्वायरमेंट है वो खत्म हो जाएगा. एंड व्हाट इज सेक्शन 9 ऑफ द फॉरेनर्स एक्ट 1946, दैट इट इज द प्रोसीडी व्हिच हैज टू प्रूव दैट ही बिलोंग्स टू द इंडियन और ही बिलोंग्स टू इंडिया, ही इज एन इंडियन सिटीजन. तो ऑल्दो अगर आप कोर्ट के सामने प्रोड्यूस नहीं हो पाए, फिर भी आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप आकर के प्रूव करें दैट यू आर एन इंडियन सिटीजन. The Supreme Court's reinterpretation, the Supreme Court clarified that while Section 9 remains fully applicable, it does not absolve the tribunal of its quasi-judicial obligation to conduct a lawful mind-applied adjudication. So basically, the Supreme Court said that yes, Section 9 is absolutely true. It is absolutely there, but this foreign tribunal has to conduct the inquiry with a lawful approach, with a lawful mind. Foreigners Tribunals Order 1964, the Supreme Court mandated that any serious civil declaration must strictly satisfy the rigorous procedural requirement laid out under this legal order. So you have to follow the entire legal order and you cannot bypass the legal order. Then what are the constitutional mandates? So Article 14, the bench explicitly noted that the constitutional guarantee of equality before the law protects all persons within the territory of India, extending to foreigners, not just citizens. Now please remember this particular question. There are certain fundamental rights which are also available to the foreigners, and one of them is Article 14. So the Supreme Court had said that right to equality, which provides equality before law, is not limited to Indian citizens. It is also available to the foreigners as well. So Article 14 has to be taken into consideration. Then Article 29 is right to life and personal liberty, which ensures the right to life, that every person has right to life except the procedure, that every person shall has the right to life and personal liberty except the procedure established by law, that no one can take your life and personal liberty except the procedure established by law. This is Article 21. Because foreigner declaration carries severe life altering civil consequences such as detention, deportation, separation from family and statelessness, the process must adhere to the Article 21 mandate of a fair, lawful and a reasonable procedure. Right. So I mean, once you are declared a foreigner, you have to leave your family, you will be deported, you will be detained, right? So a multi-facet impact on human rights. That's why the Supreme Court said that it has to be followed extremely carefully, because it is stripped off a person for multiple rights, right? Then principle of natural justice, that we have already discussed. The principle of audi alteram partem, here the other side. So this was all about today's session, guys. Thank you so much. We'll see you tomorrow at the same time. Till then, just take a good care of yourself and people around you, and yes, keep on revising things. अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले लास्ट वीक का क्विज किया, आप वो भी जाकर के कवर कर सकते हैं. सो या, विद इन एन आवर वी विल कंप्लीट बोथ द लेक्चर्स. So that's it from my side. Take a good care of yourself, keep on revising things, and remember that Rome was not built in a day. So it will take a lot of time to complete your preparation and crack some tier